start with the poem, The Wall Poem by John Barrymore. That is the poem in the class 10 first flight book. So here we will get to know what actually the ball here symbolizes in the poem. The ball here has some literal meaning. We will get to know how the child in the poem is upset by the loss of this ball. A ball that doesn't cost too much. A ball is a very cheap thing and we can just afford a ball, one or two, in place of a ball that we have lost. But here the ball is something very near to the child, and what is that thing where actually is representing ball here, we'll get to know when we'll read the poem through the lines. So it's not that he cannot buy another ball and he can make himself happy, but it's something that he cannot get back. If you have somebody who is very near to you, or if something that is very near to you, it can be any possession or in a form of a relationship. So if that person or that thing uh, goes far away from you, so definitely you are not going to get them back, because once gone forever gone is a thing like here in the poem. So when we just go about the lines in the poem, you'll get to know why the boy in the poem is so upset and so very much in grief that he is very grief stricken and he doesn't know how to react to this situation when he is losing the ball. Moving next, we'll talk about the poet of the poem. So John Barrymore is an American poet and is best known for his work that is the Dream Songs. So moving further, reading through the lines of the poem. So what is the boy now who had lost the ball? So the poet is saying that what is the boy now? The boy who has lost the ball, and how would he will be feeling? How would he be feeling now? So what will be his emotions? What will be his thoughts? So what he is to do, that what he'll do. I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over, there is it in the water. No use, no use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down as his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. So the poet here says that what kind of emotion one has when he loses something very near or dear to him. अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा नियर है या आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो अगर गुम हो जाए तो आप क्या करोगे? What is he to do? बिकॉज आपके सामने वो चीज़ आपके चली जाती है लेकिन आप उसको रोक नहीं पाते हैं, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें बहुत बारी हमारी लाइफ में होती हैं कि हमारी बहुत सारी जो हमारे दिल के करीब चीज़ें हैं जो हमें बहुत प्यारी हैं वो हमसे खो जाती हैं। तो यहाँ पे वो उस चीज़ को उस बॉल से रिप्रेजेंट कर रहा है, उस बॉल से सिम्बलाइज कर रहा है। सो यहाँ पर वो बोल रहे हैं, आई सॉ इट गो मैरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरली ओवर देयर इन द वाटर. So it seems like there is a water body, like you see, and he can see, the boy here can see the ball going down into the water body and merrily bouncing going down. So the ball after all is a thing that is not attached to you, and that has no emotions and no memories with you, because it is a materialistic thing. So it is going merrily bouncing down the street, and it is going down the street and to the water body there down the lane. So it seems like there is a street and down the street there is a water body, और जो बॉल है उस बच्चे की वो उस बाउंस करते हुए उस पानी में जो है जाके गिर जाती है.
अब बच्चा उसको जाते हुए देख रहा है लेकिन वो उसको रोक नहीं पा रहा. सो नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. सो पोएट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम अगर बच्चे को बोल देते हैं कि और भी बॉल्स तुम्हें मिल जाएंगी, बॉल्स कोई एक चीप सी चीज़ है, सस्ती सी चीज़ है, हम उसके बदले दूसरी बॉल तो ला ही सकते हैं, ऐसा तो नहीं हम बॉल के बदले बॉल खरीद नहीं सकते. लेकिन यहाँ पॉइंट जो है वो ऐसी बॉल की बात कर रहा है जो आप कभी भी वापस अपनी लाइफ में नहीं ला सकते. आप उसको अगर खो दोगे तो व्हाट इज़ दैट बॉल? इट कैन बी the innocence you have, okay, it can be the childhood memories. We can say that it is an innocence. We can say it can be your childhood memories. So the ball here is representing all these things. It can be your memories of the childhood, your innocence that is going before you. You can see it go but you cannot do anything. आप कुछ नहीं कर पा रहे हो. Next he says an ultimate shaking grief fixes the boy. एक ऐसा grief बच्चे को झगड़ लेता है कि वो उससे अलग नहीं हो पा रहा है और वो एक ही जगह पे खड़े है क्योंकि उसको पता है कि उसकी बहुत जो दिल के करीब चीज़ थी वो खो चुकी है. He stands rigid, trembling, staring down. और वो बॉल को जाते हुए देख रहा है. वो स्टेयर कर रहा है जहाँ से उसकी बॉल होते हुए मैरिली हैप्पीली वो पानी में जाके गिर गई. और वो कांप रहा है. वो इतना ग्रीफ में, इतना दुख में है कि वो एक ही जगह जो है रिजिड हो गया है कि वो हिल नहीं सकता. रिजिड मतलब जब आप एक जगह पर स्टिक हो जाते हो, आप हिल ना पाओ बिकॉज आपको एक ऐसे इमोशन ने स्टक कर लिया है दैट यू आर नॉट एबल टू मूव. ओके. Then he says all his young days in the harbors where his ball went, I would not intrude on him. Then the poet further says कि जितने भी उसके young days हैं, that is what I was talking about, the childhood days. Childhood days जो हैं वो harbor here represents the materialistic world. So you must know harbor here. What is actually the harbor? Harbor is a place in a port where you load and unload the ships and actually representing the materialistic things. तो जहाँ पर आप goods चीज़ें material को उतारते हो या चढ़ाते हो किसी बोट के ऊपर, that place is called the harbor. किसी भी एक बंदरगाह पे या पोर्ट पे. सो उसी हार्बर में बोल रहा है कहीं उसकी जो बॉल है वो खो गई है. और वो बॉल कहाँ खोई है? इस ज़िंदगी की जद्दोजहद में जहाँ पर हम लोग सिर्फ मटीरियल्स के पीछे भागते हैं. वी आर जस्ट रनिंग आफ्टर मटीरियल्स एंड पोजेशंस. एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी चीज़, तीसरी आ गई तो उसके बाद चौथी चीज़. सो वी आर ऑल डिज़ायरस. वी आर जस्ट surrounded by so many materialistic things. So here again the innocence of the child and his childhood memories get lost in the harbor of life, that is the materialistic world. So his ball went. No, no, I would not intrude on him. Now his ball has already gone away and the boy is in so much grief and he's just so much upset with this um, ball going away from him that the poet says that it would not be good if he will intrude his thoughts on him, that he will impose his thoughts on him. So it will not do any good if the poet will intrude on him or impose his ideas. That means impose his ideas on him. So the poet says that he has to learn how to overcome this loss because nobody else can teach him to overcome the loss or uh, tell him how to get out of the situation, but it's only the person who is bearing the loss would have to understand it. So moving further, a dime and another ball is worth now. So अब poet क्या कह रहा है? Dime is here representing money, right? So money will not do any good to that child because उसके लिए वो बिल्कुल worthless होगा अगर आप उसके लिए कोई नई बॉल खरीद के ला सकते हो. बिकॉज मनी से तो वो वाला सुख जो है, कंटेंटमेंट जो है आपकी लाइफ में, वो आपको नहीं मिल सकती. ठीक है. और उसी लॉस के साथ, उसी
खोने के साथ, जो कि उसकी मेमोरी का खोना है या उसके चाइल्डहुड डेज़ का खोना है, उसके साथ वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस करता है. और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लाइक ही सेज इन द नेक्स्ट लाइन दैट इन द वर्ल्ड ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जब आप कोई चीज़ खो जाते हो, उसके बाद जो आपको फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक balls will lost always, little boy. And he is trying to explain the boy who is sad and who is in grief that इस दुनिया में where in the world of possession, वही जो मैं हार्बर की बात कर रही थी, मटेरियलिस्टिक दुनिया की बात कर रही थी, वहाँ पे लोग जो हैं हमारे पास, वो लोग कौन है? वो हम लोग ही. सो हम लोगों के पास बहुत सारी हमारी मेमोरीज़ हैं, चाइल्डहुड डेज़ हैं, या फिर हमारी जो इनोसेंस है वो हमारे पास होंगी, लेकिन हम उनको कहीं उन पोजेशंस के साथ कहीं मटेरियलिस्टिक दुनिया में कहीं खो देंगे. तो वही वो उसको सेंस कराने की कोशिश कर रहा है, ये बता के कि बॉल्स जो लोग हैं वो दे विल टेक बॉल्स डेफिनेटली, दे विल बी हैविंग दोज बॉल, बट दे विल डेफिनेटली बी लूजिंग देम ऑल्सो. ऐसा तो नहीं है किसी की लाइफ बिल्कुल बड़ी अच्छी है, ना कोई उसमें दुख है और कंटेंटमेंट की लाइफ जी रहा है, सेटिस्फेक्शन की लाइफ है. कभी ना कभी आप लाइफ में कोई ना कोई चीज़ तो खोते ही, आपसे दूर तो कोई ना कोई चीज़ हो जाती है, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ रिलेशनशिप और एनी थिंग दैट यू पोजेस. वो कोई मटीरियलिस्टिक थिंग भी हो सकती है, या कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई आपका रिश्तेदार हो सकता है, उसको भी तो खोते हो कभी कभी आप. तो उस लॉस से आपको उभरना क्या है, वही जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, दैट हाउ इज़ गोइंग ही इज़ गोइंग टू ओवरकम दिस लॉस. क्योंकि लोगों के साथ ऐसा तो होता ही है. ठीक है. सो फर्दर ही सेज नो वन बाइज अ बॉल बैक. और कोई भी ऐसी दुनिया का सुख नहीं है, या ऐसी कोई आपने मनी नहीं बनाई जिससे आप उस लॉस को जो है रिकवर कर सको. ठीक है. सो मनी इज़ एक्सटर्नल. जो भी पैसा है, धन दौलत है, वो सब चीज़ें एक्सटर्नल है, बाहरी दिखावा है. उनसे कभी भी आपको कंटेंटमेंट या लाइफ में हैप्पीनेस या फिर वो खोई हुई चीज़ों या रिलेशनशिप्स को या खोए हुए इंसानों को वापस नहीं ला सकते. सो इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो उसका सेंस कर रहा है वो क्या है? ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज. डेस्परेट मीन्स द आइज विच आर होपफुल. ओके. सो ही इज़ होपफुल. द चाइल्ड इज़ होपफुल है. ऑफकोर्स एवरीबडी इज़ होपफुल इन लाइफ की अभी भी हम होपफुल ही हैं. कोरोना सिनेरियो चल रहा है कि हाँ अभी ठीक हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी वैक्सीनेशन आ जाएगा, हो सकता है इसका धीरे धीरे इसका इफ़ेक्ट जो है वो काम होना शुरू हो जाए लोगों पे. सो ये तो होपफुलनेस तो बनी रहती है हमेशा हमारी लाइफ में. जब भी हम किसी प्रॉब्लम में आते हैं तो समथिंग इज़ देयर, दैट इज़ द होप ओनली विच कीप्स अस मोटिवेटिंग, विच कीप्स अस गोइंग. तो यहाँ पर भी वो यही बताने की कोशिश कर रहा है, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज. तो बॉय जो है वो सेंस कर रहा है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसने सीखा है. क्या सीखा है? द epistemology of loss, how to stand up. What is epistemology? That is the origin of loss. Where the loss origins, उसके साथ साथ आपको जहाँ से लॉस आपको होता है उसके साथ पे आपको खड़ा होना भी सिखा देता है वो लॉस. उस लॉस को रिकवर करके आपने उसके साथ how you are going to overcome that or stand up straight again and move on in your life. So knowing what every man must know one day, और ये चीज़ का एहसास होना, उसको सेंस करना या उसका आपको अंडरस्टैंडिंग होना कि हर एक इंसान कभी ना कभी ये जो सेंस है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करेगा. क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि कभी किसी की कोई चीज़ खोती नहीं है, ऐसा तो होता ही है. हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसे इंस्टांसेस आते हैं जब हम ऐसी सिचुएशन का सामना करते हैं लाइक द बॉय इज़ फेसिंग. सो उस सेंस के साथ, वो लॉस वाली जो सेंस है उसके साथ आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टू स्टैंड अप एंड टू मूव ऑन. हाउ विल यू मूव ऑन इन टू योर लाइफ? Leaving behind everything. So, knowing what every man must know one day and most know many days how to stand up. So, दुनिया में जितने भी लोग हैं जो इस तरह की सिचुएशन में पढ़ते हैं, और उनमें से जो मैक्सिमम लोग हैं वो ये भी जानते हैं कि इससे उभरना कैसे है, बिकॉज वो जो लॉस है वो उनको ये सब सिखा देता है. तो लॉस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ, दैट यू लर्न टू नो दैट हाउ विल यू ओवरकम द लॉस एंड मूव ऑन इन लाइफ. If you will not move on, you will be stagnant and you will just keep crying on the loss and you will get nothing in hand. So it is very important that you have the knowledge, the understanding, epistemology of loss, that how you are going to stand up and move on
and not crying over the spilled milk. Okay, so this is the poem. Hope you understood it. So, as we got to know that loss here in the poem symbolizes something uh, that is innocence or the childhood. Okay, there are some words given. Oh, there are other balls. That means we can just have other balls. If we're talking about the ball that we play with, we can just buy another ball if we have money. But the ball will not give any sense of contentment to the child, because the ball that he has lost, that is his childhood or innocence, that cannot be get bought back with that money you have. So Rigid already explained that is something stuff. Intrude means to just impose your ideas on someone. So dime, I already told you, that is used for money here, that is 10 cents in US. So hopeless, desperate is hopeless, already explained. Epistemology is the understanding of the nature of loss. That means the having knowledge or having the understanding of something. So moving next, so what we get out of the poem, what is actually the main idea of the poem. So the ball in the poem represents so many different things to different people. So it can be, like I told you, that it can be a loss of something that you love so much, that can be a materialistic thing, or that can be somebody who is very near to you in life. It can be somebody, some friend, it can be some relation. So to everyone, though, it is something that has been lost. It could be something abstract or something concrete that was lost. Something, it can be an abstract idea or some concrete idea. Abstract in the sense that childhood or innocence, or concrete idea means when you have lost some friend or you have lost his friendship. So that can be a concrete idea. So it could be a feeling that you have gone stray, or the death of a loved one. So again, the same thing, if some loved one has gone or left you behind, or they had gone away from you, then again you are going to have the same feeling. So for different people, the different feelings can represent the loss. Okay, so the boy, little boy here in the poem, has lost his ball, and so what he can buy many new balls. तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, अगर घूम गई तो हम तो सोचेंगे कि वो नहीं खरीद लेगा, ठीक है. But he has a very deep emotional attachment and memories associated with that ball, so he regrets over the loss of the ball. So again, I'm talking about the ball here represent the memories and his emotions, or his childhood memories, or his innocence. So that's why he wants that ball back. He doesn't want any other ball to replace that ball, because that is the only ball which can bring him that sense of satisfaction, or that he, the memories that he is associated with, the ball has those memories attached to it. So no other ball will compensate that loss. So a boy loses a ball, he is very upset. A ball does not cost much, nor it is difficult to buy another ball. When then why the boy is so upset? So we got to know that why is the boy was so upset. So we read the poem and we got to know. So the poet here is indirectly trying to tell us that we should learn how to cope up with the loss. Money is something very external, because that cannot buy you happiness, or that cannot buy you memories. So we all should learn our responsibility and learn to cope up with the loss. So we should have the responsibility that how we are going to cope up. That means how we are going to manage with the loss, or we overcome the situation, or overcome that problem or the hurdle in our life. Moving further, just a message in the poem. So the message that the poet wants to convey in the poem is the importance of loss, and what is the importance of loss in someone's life is that we get to know how responsible we are. We become more responsible. So we should not forget the importance of possession. We do owe things. We have so many materialistic things in life, but we must know if they get lost, how we are going to overcome that loss, or how we are going to stand up and move on in our lives. It's not that we will regret and cry over the lost thing. So how does the boy feel at the loss of the ball? We know that he is much troubled, he is in a shaking grief, he cannot uh, imagine being detached to his so memorable thing, that is the ball here. So he cannot buy the another ball, because his
memories, his childhood days, or his emotions are attached to that ball. So that's why no other ball can replace that ball. So money is external. Why does the poet mean by this expression taken from the ball? So money, we already know that money cannot buy us the happiness. Money cannot buy us the contentment. So money is, of course, is an external thing, or whatever material possessions we have. कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमारे पास हैं, जितना मर्जी महंगा मोबाइल, गाड़ी, घर, बंगला, वो हमें हैप्पीनेस नहीं देगा. बट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम समथिंग विद इन, समथिंग डीप इन साइड योर body and soul. So that's why money here is external. You cannot buy the memories from that money. You cannot buy your childhood from that money. We cannot buy the emotions out of that money. So that's why the poet is saying here that money is external. So he explained the world is full of possession and money is external then. Hope you understood the poem. Thank you.